हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू क्वांटिफायर्स। लाइक ऑलवेज आज भी हम जो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन करेंगे इट इज़ अ ब्लेंड ऑफ अ नैरेटिव, अ स्टोरी लाइन। किस तरह से एक पर्टिकुलर कैरेक्टर जो है रिलेटेड टू क्रिसमस, वो कैरेक्टर क्रिएट किया गया, उसमें हर एक चीज़ के छोटे मोटे एलिमेंट्स हैं एंड इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग काइंड ऑफ अ पैसेज। अगेन इस टाइप के पैसेज अगर एग्जाम में आते हैं तो चाहे आपको कैरेक्टर्स के नेम बहुत डिफिकल्ट लगें, लेकिन उसके पीछे जो स्टोरी लाइन है वो काफ़ी ईजी एंड रिलेटेबल हो जाती है। लेट्स गेट डाउन टू अंडरस्टैंडिंग द पैसेज। Rudolph's story began with a Jewish Montgomery Ward copywriter named Robert May. The department store began preparing for Christmas 1939 nearly a year in advance and tasked May with penning an original holiday story that they could market to shoppers. May agreed to tackle the assignment despite difficulties in his personal life. May's wife had been diagnosed with cancer, and as the year wore on, her health deteriorated. When she died in July 1939, May was given the option to give up the assignment. However, he found solace, that is peace, in the story, drawing inspiration from his young daughter's fondness, that is liking, for reindeer at Lincoln Park Zoo. And then comes something in inverted commas. Gratefully, I buried myself in writing, he wrote at the time. In August, May filled a story told in 89 couplets. Montgomery Ward transformed the poem into a 32-page booklet distributed to children for free, a meaningful gesture in a country still shaken by Great Depression. The company gave away more than 2 million copies that season. So basically we are given a backdrop कि Rudolph as a character, ये Rudolph का story जो है वो writing में कैसे आया. We've been told something about this guy Robert May, how he got into the whole domain of writing and how he wanted to come over this particular feeling of grief after losing his wife who had been diagnosed with cancer. उसको किस तरह से solace मिला in this particular story. And story का एक background ये भी दे रखा है that his daughter was very much fond of the zoo where she had probably seen a particular character or reindeer for that matter. We've also been told about the fact कि किस तरह से इस story की जो copies हैं या इसके जो booklets हैं जो कि 32 pages के थे, उसकी million copies जो हैं उस season में दी गई. Despite the success, May struggled with life as a single father. Saddled with medical debt, he continued working at Montgomery Ward and eventually remarried. After World War II, Montgomery Ward unexpectedly granted him the rights to Rudolph. Knowing how popular the book had been, May sensed an opportunity to turn his luck around. He persuaded his brother-in-law, Johnny Marks, to write music to accompany the story. By then, Marks was already a professional composer who had been writing songs in his teenage years. Marks would later go on to publish 175 original songs, including television scores, radio hits and commercial jingles. अब इस point में, इस paragraph में, what are we talking about here? We are talking about after the success of this particular book, this guy May decided to seek the help of his brother-in-law to add some sort of music to this particular story of Rudolph. When Marks presented the song to Gene Autry, the so-called singing cowboy was not initially enthusiastic. However, Autry's wife Ina was moved by Rudolph's underdog story and predicted it would strike a chord with other listeners too. In perhaps the most significant turning point of Marks' career, she persuaded Autry to record Rudolph the Red-Nosed Reindeer in the time for the 1949 holiday season. It shot to the top of the Billboard's country, western and pop charts and remained a top holiday hit for decades. So we've been told कि किस तरह से एक adversity के time probably May had written a particular story, how the story became a hit and he became a sensation overnight, and then he asked his brother-in-law to incorporate some music to the story. Then they went to some sort of a cowboy singer or the singing cowboy जो उसको नाम दिया गया था, एक appellation दिया था, and जो इसने गाना गाया that remained in the Billboard chart for decades. According to Rick Goldschmidt, the official historian of Rankin and Bass Productions, the song's popularity kicked off a chain reaction of coincidences and connections that played out during the early 1960s.
Marx lived in Greenwich Village, where he became friends with a neighbor named Arthur Rankin. In 1960, Rankin formed Rankin Bass Productions with collaborator Jules Bass, and the two began producing children's television specials. Rankin reached out to Marx to broach the possibility of putting Rudolph on television as a part of GE Fantasy Hour, a branded series of television specials sponsored by General Electric. So see how the rippling effects are being told to us throughout the passage as to how one after the other there were serendipitous incidents that were taking place in the life of this guy May, and किस तरह से इसका जो गाना था and इसका जो स्टोरी था वो अब टेलीविजन पे जो है प्रोपोगेट होने लगा थ्रू जनरल इलेक्ट्रिक. By mid-1960, Rudolph the Red-Nosed Reindeer was officially in production. Over the next 18 months, GE poured the equivalent of more than $4.5 million into the individual's innovative stop-motion animation. The company's motivation was not purely altruistic. Altruism is acts of generosity. जब आप kind acts करते हो. Its Fantasy Hour series created an opportunity to market its housewares directly to viewers. Along with the hour-long special, GE produced 4 accompanying commercials featuring characters from Rudolph the Red-Nosed Reindeer. These ads pushed new products like an electric toaster, an electric can opener and an electric blanket. So basically what have we been told about here कि GE जो है General Electric ने इसके कैरेक्टर को टेलीविजन पे सिर्फ इसीलिए नहीं प्रोपोगेट किया था क्योंकि वो ऑल्ट्रुइज्म में यानी कि जेनरस और काइंड एक्ट्स में जाना चाहता था. But by making Rudolph the Red-Nosed Reindeer as the mascot, उन्होंने कितने सारे अपने products जो हैं उससे related बेचने शुरू किए. So this is how we start by talking about a particular character, how that character was improvised over a period of time and how it reached out to the pinnacle of success eventually. Right? So story बहुत easy है पढ़ने में, काफ़ी ज़्यादा interesting भी है. एक element of narration है इसमें. Again अगर इस story को आप visually समझने की कोशिश करो तो आपको स्टोरी लाइन को समझना बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है. नाउ कमिंग टू द क्वेश्चंस ऑफ दिस पर्टिकुलर पैराग्राफ. क्वेश्चन नंबर 1. Which of the following is not true about the song Rudolph the Red-Nosed Reindeer? Let us take it in a reverse order. A decade after its creation, the country song based on Rudolph the Red-Nosed Reindeer topped the pop charts in the US. Billboard में था तो ये तो करेक्ट है. Right? This is true. Until the end of World War II, the creator of the rhymed couplets Rudolph the Red-Nosed Reindeer did not own its copyright. ये भी करेक्ट बात है. उसको कॉपीराइट जो है काफ़ी ज़्यादा बाद में जाके जो है उसको उस चीज़ का कॉपीराइट मिला जहाँ पे वी हैव बीन टोल्ड के वर्ल्ड वॉर 2 के बाद मॉन्टगमरी वार्ड ने जो है उसको ग्रांट किए द राइट्स टू रूडोल्फ. Rudolph the Red-Nosed Reindeer was a Christmas-themed storybook gifted to children visiting Montgomery Ward in 1939. ये भी हमें बताया गया है क्योंकि we have been told कि it was a very meaningful gesture because Montgomery Ward में ये जो poem है आपकी 32 पेज का बुकलेट था, it was given to the children for free and वो भी at a time जहाँ पे country जो है it was still shaken by the Great Depression. Rudolph the Red-Nosed Reindeer was created by a departmental store in the United States still struggling from decade-long Great Depression. It was not created by the departmental store that was struggling from the Great Depression. It was created by a particular individual जिसको बोला गया था रॉबर्ट मे को. सो डिपार्टमेंट व्हेन जब क्रिसमस की तैयारी कर रहा था देन इट वाज बीइंग टोल्ड बाय द डिपार्टमेंट टू दैट गाय कि आप जो है ये असाइनमेंट है आपका जहाँ पे आपने ये एक सॉन्ग जो है वो प्रिपेयर करना है या एक आपने स्टोरी प्रिपेयर करनी है. सो दिस इज नॉट अ ट्रू पॉइंट अकॉर्डिंग टू द पैसेज. कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. The author would most likely to use which of the following to describe the story of Rudolph the Red-Nosed Reindeer? Author किस वे में the author would most likely to use which of the following to describe the story? अब हमारे को स्टोरी का जो एक क्रोनोलॉजी है वो क्या बताया है? Chronology हमारे को ये बताया है that there was a particular guy whose wife was suffering but his daughter liked a particular character. After the demise of his wife, he found a lot of solace in writing and creating stories, and how his stories led to a series of
coincidences that were very, very fortunate for this guy, eventually bringing him a lot of good fortune and success. It represents the angst-ridden period of Great Depression and 2 World War. अगर इतना ही angst period है of Great Depression and World War, तो हम रूडोल्फ का स्टोरी को as a success क्यों दिखाएंगे, राइट? फिर तो हमारे को सारी चीज़ें नेगेटिव ही बतानी चाहिए पैसेज में. It stands for one of the most significant marketing successes of 20th century. Market success क्यों हुआ? क्योंकि वो पर्टिकुलर कैरेक्टर या वो पर्टिकुलर स्टोरी जो है हिट बन गई, क्योंकि उसके पीछे की जो स्टोरी लाइन थी उसमें जो म्यूजिक एड ऑन किया गया था, जिस तरह से उसको गाया गया था. लेकिन इन सारों का असम्पशन क्या था, किस चीज़ पे ये पूरी बात खड़ी थी? दैट हाउ ही वॉन्टेड टू गेट रिड ऑफ द पेन दैट वॉज देयर इन हिज हार्ट आफ्टर लूजिंग हिज वाइफ, एंड हाउ राइटिंग दिस पर्टिकुलर स्टोरी लेड टू अ सीरीज ऑफ सेरेंडिपिटस एक्ट्स एंड इवेंट्स. ये भी नहीं है. It is not just marketing success. There was a lot of substance in the story. It is an icon that represents the joy of Christmas and the season. Partially correct, definitely. But ये story जो है आपके एक character के आसपास revolve कर रही है, and किस तरह से वो character overnight sensation बना, पूरा passage उसके आसपास revolve कर रहा है, and not just the joy of Christmas season. Definitely the character was created around Christmas, but the character itself became very humongous and बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल रहा. इट्स अ पीस ऑफ मॉडर्न फोकलोर दैट इज़ अ मेटाफर फॉर ओवरकमिंग ऑब्स्टिकल्स, कि किस तरह से जब ऑब्स्टिकल्स आते हैं आपने रुकना नहीं होता है, एंड उस चीज़ को टेस्टिफाई करने के लिए इफ़ यू टेल दिस पर्टिकुलर स्टोरी इन द मॉडर्न ईपॉक, इट इज़ रियली गोइंग टू बी हाईली मोटिवेटिंग. सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर पैसेज बेस्ड ऑन द स्टोरी लाइन दैट हैज़ बीन क्रिएटेड इज ऑप्शन नंबर डी. It can be inferred that the popularity of the 1949 song Rudolph the Red-Nosed Reindeer is attributed or attributable to. Attributable का मतलब होता है किसी को क्रेडिट देना. अब इस पर्टिकुलर चीज़ का क्रेडिट हम किसको दे रहे हैं? Rudolph being a metaphor for embracing differences. डिफरेंसेस की बात नहीं की है, किसी के पोटेंशियल को रिकग्नाइज करने की बात नहीं की है. हमें ये कैरेक्टर क्या चीज़ बताता है कि रेजिलियंस जो है आपकी लाइफ में कितना इंपॉर्टेंट है, कि अगर आपके पास गरीबी भी है. वी हैव बीन टोल्ड दैट ही वॉज बैटलिंग एज अ सिंगल पेरेंट. एट द सेम टाइम हिज वाइफ passed away, she perished because she had a deadly disease, but still this person he was perpetually working and making a lot of efforts to make his song a big success, which eventually he did. Marx being persuaded by his brother-in-law to write music to accompany the story. It was not Marx who was being persuaded, it is the other way around. Rudolph being portrayed as a loser with little or no chance of succeeding in life. क्या हम इस चीज़ को इन्फर कर सकते हैं कि रूडोल्फ जो है उसको एज अ लूजर जो है पोर्ट्रे किया था, who had little or no chance of succeeding in life? ऐसा कुछ भी नहीं है. हमारे को सिर्फ ये बताया है कि he was a red-nosed reindeer. क्वेश्चन ये बोलता है कि द पॉपुलैरिटी ऑफ 1949 सॉन्ग रूडोल्फ द रेड नोज रेनडियर इज एट्रीब्यूटेबल टू. तो इसकी पॉपुलैरिटी जो है आप किसको दे सकते हो कि ये सॉन्ग इतना ज़्यादा पॉपुलर क्यों हुआ, राइट? नाउ इफ वी कम समवेयर टू द मिडल ऑफ द पैराग्राफ. अब यहाँ पे हम लोगों को क्या बताया है? मार्क्स के बारे में बताया है, एंड समवेयर वी हैव बीन टोल्ड कि जब ये एक पर्टिकुलर विलेज में रहने गया, सो इसका जो सॉन्ग है, ऑफ कोर्स वी हैव बीन टोल्ड दैट इट रिमेन्ड इन द बिलबोर्ड्स ऑफ द कंट्री वेस्टर्न एंड पॉप चार्ट्स एंड टॉप हॉलीडे हिट रहा वो डेकेड्स के लिए. उसके बाद एक और चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट बताई गई है कि अकॉर्डिंग टू रिक गोल्डश्मिट, द ऑफिशियल हिस्टोरियन ऑफ रैंकिन बैस प्रोडक्शंस, the song's popularity kicked off a chain reaction of coincidences and connections that played out during the early 1960s. Marx lived in Greenwich Village where he became friends with a neighbor whatever XYZ. अब यहाँ पे हम लोगों को ये बताया है कि ये सॉन्ग जो है 1949 का था, लेकिन इसकी पॉपुलैरिटी इतनी ज़्यादा बाद में क्यों हो गई? इसकी पॉपुलैरिटी इसलिए हुई बिकॉज ही वॉज लिविंग in Greenwich Village where he became friends with this guy
आर्थर रैंकिन, जो कि आपका रैंकिन एंड बैस प्रोडक्शंस का he probably owned that particular thing, and then he reached out to Marx कि भाई आपका ये पर्टिकुलर सॉन्ग जो है या आपका ये पूरा जो स्टोरी है, वी वांट टू पुट इट इन द टेलीविजन, एंड दैट इज हाउ ये सॉन्ग जो है टेलीविजन की फील्ड में भी बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गया, राइट? तो इसकी पॉपुलैरिटी बड़ी है. सो करेक्ट आंसर इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर 4. Which of the following is not or did not contribute to making of Rudolph Red-Nosed Reindeer? Christmas of 1939 जो हम लोगों को बोला है, it did. May's daughter, yes, she was very fond of this character. Robert May's wife, yes, he wanted to get over the particular demise of his wife, and इस पूरी writing ने जो है उसको कहीं ना कहीं consolation दिया. Great Depression. So the correct answer is going to be option number A. ग्रेट डिप्रेशन ने कंट्रीब्यूट नहीं किया था. ग्रेट डिप्रेशन का सिर्फ ये बताया है दैट इवन दो इट वाज द कंट्री वाज रिकवरिंग फ्रॉम द ग्रेट डिप्रेशन, इन लोगों ने एक बहुत एक्ट ऑफ जेनरोसिटी दिखाई अपने मॉन्टगमरी वार्ड के बच्चों को जो है ये पर्टिकुलर किताब गिफ्ट करके. सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए. Montgomery Ward unexpectedly granted him the rights to Rudolph. Which of the following, if true, best explains Montgomery Ward's decision? Montgomery Ward ने ये decision क्यों लिया होगा? ये if true मैंने आपको पहले भी बताया था. if true को आपने assume करना है that this is true. There is no contention about this particular thing. अब A बोलता है after the Second World War, when the Holiday Story returned in 1946, Montgomery Ward handed out 3.6 million copies of the book. तो अगर ये है तो इससे इसके राइट्स का तो कुछ लेना देना है ही नहीं. Montgomery Ward's plan to reprint about 2 million copies of the Holiday Story 1940 was shelved. क्या कहीं पे पेपर शॉर्टेज की बात की है? क्या हम ये बोल सकते हैं क्योंकि पेपर शॉर्टेज हो गई इसीलिए उन्होंने राइट्स रूडोल्फ के जो हैं मे को दे दिए? नो. In 1947, Montgomery Ward's board of directors believed that Holiday Story has exhausted its revenue-making potential. कि क्योंकि अब उसका revenue making potential जो है for that particular season कम हो गया है. Despite its success, यहाँ पे उन्होंने क्या बोला है? Montgomery Ward ने unexpectedly granted him the rights to Rudolph. Knowing how popular the book had been, May sensed an opportunity to turn his luck around. अब यहाँ पे हम लोगों को क्या बोला है? सबसे ऊपर इन्होंने कि बुकलेट जो है उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट किया बच्चों को, मीनिंगफुल जेस्चर, एंड कितना किताब जो उन्होंने किया, दे प्रॉबली सोल्ड समवेयर अराउंड 2 million copies that season. The company gave away 2 million copies that season. तो अब इसका मतलब क्या है? आप खुद लॉजिक लगाओ. अब अगर 2 million कॉपीज जो हैं ऑलरेडी एक सीजन में बिक चुके हैं, सो इसका मतलब उसका जो पोटेंशियल है आगे बिकने का या आगे सर्क्यूलेट होने का, बिकॉज वी हैव बीन टोल्ड कि इन्होंने काफ़ी हद तक जो वार्ड के बच्चे हैं उनको भी दिया. अब 2 million तो बच्चे हो नहीं सकते वार्ड में, इसका मतलब कुछ कॉपीज काफ़ी हद तक बिकी भी हैं. सो दैट मीन्स दे हैड एग्जॉस्टेड द होल स्टॉक ऑफ सेलिंग द कॉपीज एंड दे वर प्रिटी श्योर कि इसके बाद जो है इसके रेवेन्यू जनरेशन इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होगा. सो प्रॉबली दैट इज वाई दे मस्ट हैव गिवन दिस पर्टिकुलर थिंग, the rights of Rudolph to this guy May. Montgomery Ward did not offer Christmas gifts to shoppers during the years from whatever XYZ, and the Holiday Story remained on hiatus, that is a break, until 1946. इसका कुछ लेना देना नहीं है. So the correct answer for question number 5 is going to be option number 3. So this passage was of course not at all very difficult to understand. It was a very light-hearted passage which was somewhere revolving around the storyline of Christmas and how a particular person probably reached out to the pinnacle of success while overcoming the adversities. So जब आपको इस तरह का passage आता है जिसमें एक structured story होती है, you must put your hand into such passages because they are relatively easy to understand. Also, there wasn't any, you can say, advanced vocabulary words that have been used by the author anyhow in this particular passage. So I'll see you with another meaningful passage in the next session. Until then, you can read more and practice more as it is really going to be beneficial for you. Thank you.